हेलो एवरीवन, सो फाइनली दिस मॉड्यूल केम। हमने थियरी पार्ट पूरा कर लिया है। हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में से रेशो कैसे कैलकुलेट करने हैं ये पार्ट भी पूरा कर लिया है। नाउ इट इज टाइम टू सॉल्व अ फुल लेंथ क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। सो हियर वी गो। दिस इज आवर क्वेश्चन फॉर दिस मॉड्यूल। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। आपके बुकलेट में से क्वेश्चन नंबर 7 निकाल लो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का। जब तक आप वो काम कर रहे हैं, देखो यहां पे क्या लिखा है, मैं पढ़ लेता हूं आपके लिए। डू नॉट बी एम्बेरेस्ड बाय योर फेलियर्स, लर्न फ्रॉम देम एंड स्टार्ट अगेन। गलती हो रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में, कोई बात नहीं, सीखो गलती क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और वापस से करो। ओके, सो हियर वी गो। क्वेश्चन नंबर 7, दिस इज आवर क्वेश्चन। ये देखो, सागर साहिल, हाँ, सागर साहिल सैम वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3:3। Their balance sheet is as follows। तो ये देखो, ये बैलेंस शीट है। लाइबिलिटी में क्रेडिटर, बिल्स पेबल, कैपिटल, और एसेट में कैश, डेटर लेस आरडीडी, फर्नीचर, कंप्यूटर, व्हीकल। अभी देखते हैं आगे क्या इंफॉर्मेशन दिया। ये देखो, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है, इसलिए दो अलग अलग स्लाइड पे लिखा है। On 1st April 23, Sahil retired from the firm. Goodwill is to be valued at an average profit and loss of last 5 years, which were as follows। ये देखो, ये हमें प्रॉफिट्स और लॉसेस दिए हैं 5 साल के, तो इससे हमें गुडविल वैल्यूएट करना है, रेडीमेड दिया नहीं है। कंप्यूटर भी डेप्रीसिएटेड। एक एक करते हैं क्या? चलो वापस यहां पे, ये फर्स्ट एडजस्टमेंट है गुडविल वाला, तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा गुडविल। अभी 7th एडजस्टमेंट इससे रिलेटेड है। देखो, इट वाज डिसाइडेड दैट गुडविल शुड नॉट अपीयर इन बुक्स ऑफ न्यू फर्म एंड अमाउंट पेएबल टू साहिल इज टू बी ट्रांसफर्ड टू हिज लोन अकाउंट। It was decided that goodwill should not appear in new firm। मतलब गुडविल रेस तो करेंगे, लेकिन साथ में राइट ऑफ भी करेंगे। इसीलिए ये 7th एडजस्टमेंट भी जरूरी है while रीडिंग फर्स्ट एडजस्टमेंट। यहां पे गुडविल का वैल्यू मिल जाएगा, वो गुडविल रेस करेंगे क्योंकि कुछ बोला नहीं है एट फुल वैल्यू, फर्म के वैल्यू पे जो भी गुडविल का वैल्यू मिलेगा। सो गुडविल टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल एंड देन इट वुड बी रिटन ऑफ, क्योंकि फर्म के बुक्स में अपीयर नहीं करना है, ऐसा पार्टनर्स ने डिसाइड किया है। सो रिमेनिंग पार्टनर्स टू गुडविल, मतलब ही क्या, ये ट्रीटमेंट 1 है। ट्रीटमेंट 1 व्हेन गुडविल इज रेज्ड एट फुल वैल्यू एंड इट इज रिटन ऑफ एट द एंड। न्यू फर्म में गुडविल नहीं आएगा, यही तो बोला है, तो हमें बैलेंस शीट एसेट में लिखना नहीं है, नए बैलेंस शीट में। चलो, एनपीएसआर में ये गुडविल डिवाइड होगा रिमेनिंग पार्टनर्स में, और ओपीएसआर में ऑल पार्टनर्स में। पहले गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा हमें। सेकंड एडजस्टमेंट बोला है कंप्यूटर टू बी डेप्रीसिएटेड एट 10%, तो कंप्यूटर को मार्क कर लो। फिर बोला है फर्नीचर टू बी रीवैल्यूड एट 15,000, तो फर्नीचर को भी मार्क कर लो। देन इट इज व्हीकल अप्रिसिएटेड बाय 20%, व्हीकल को मार्क कर लो। आई होप आप लोग भी मार्किंग कर रहे हो अपने बुक में समझ के। आरडीडी वॉज नो लॉन्गर नेसेसरी, आरडीडी जरूरी नहीं है, तो डेटर्स फुल वैल्यू पे लिखना है हमें। सागर एंड सैम विल शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। न्यू पीएसआर रेडीमेड दिया है, तो अगर कहीं पे जीआर का जरूरत लगता है तो हमें पता है हाउ टू कैलकुलेट जीआर। ओपीएसआर है, न्यू पीएसआर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी 7th एडजस्टमेंट तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था, उसका गुडविल का पार्ट छोड़ के हमें बोला था कि जो भी वैल्यू आएगा रिटायरिंग पार्टनर का, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। सो हियर वी गो। क्या क्या करने बोला था? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, अगर रिवैल्यूएशन बोला तो रिवैल्यूएशन लिखो, लेकिन क्वेश्चन में क्लियरली इट इज मेंशन्ड टू प्रिपेयर P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड देन कैश अकाउंट। लाइक आई हैव टोल्ड यू इन एडमिशन ऑफ पार्टनर आल्सो, कैश या बैंक अकाउंट हमेशा हम एज अ वर्किंग बनाएंगे, ताकि जो भी बैलेंस है अल्टीमेटली वो हमें समझे। इफ यू डोंट वांट टू प्रिपेयर दिस, इफ क्वेश्चन इज नॉट मेंशनिंग टू प्रिपेयर दिस अकाउंट, इट इज ओके। आप डायरेक्टली बैलेंस शीट के इनर कॉलम में प्लस माइनस दिखा सकते हो जो भी कैश बैंक में है। इट इज अप टू यू। अकाउंट बनाया तो भी अच्छी बात, वर्किंग नोट में, नहीं बनाया तो बैलेंस शीट में दिखा लो प्लस माइनस एंड देन बैलेंस शीट। नाउ पॉज द वीडियो, ये फॉर्मेट रेडी कर लो सब, और फिर आप कंटिन्यू करो, रिज्यूम करो, ताकि आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। हियर वी गो। सबसे पहले कैपिटल बैलेंसेस, जैसे मैंने बताया लेजर अकाउंट्स अगर हमने कोई बनाए हैं तो फर्स्ट विल राइट ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ दोज लेजर अकाउंट्स। सो P&L एडजस्टमेंट में देयर इज नो ओपनिंग बैलेंस। कैपिटल अकाउंट डेफिनेटली विल बी रिकॉर्डिंग ओपनिंग बैलेंस ऑन लायबिलिटी साइड, बोला है ये कैपिटल, तो ऑन क्रेडिट साइड आएगा।
So capital में we'll write buy balance brought down 22,500, 17,500 and 13,500. Also we have cash account. So cash account में भी we will write opening balance. Cash account debit side because it is asset. So to balance brought down 4,500. Balance sheet में तो कुछ जरूरत है नहीं कुछ लिखने का अभी. So now we'll start one by one. सबसे पहले क्या है? Daters. So debtors के लिए it was said RDD is no longer necessary. That itself means 500 का RDD जो माइनस किया वो अभी नहीं करेंगे. Sundry debtors का straight amount दिखाएंगे 5,000 outer column में and this 500 as RDD is no longer necessary. This will be profit for us. So we will record it in P&L adjustment on credit side by the RDD and the amount is 500. You can observe this. Why I'm moving here and there because you have to see this amount as well. Okay. Now moving forward, next adjustment बोला है furniture 12,500. Adjustment क्या है उस पे? 15,000 हो गया. Furniture is appreciating. So on asset side again, we'll write furniture 12,500 and the outer column should be 15,000. So it is appreciated by 2,500. Asset increasing. Profit है revaluation account या P&L adjustment account जिसको बोलते हैं. On credit side, we'll record this. Okay, moving further, computers. Computers 21,500 original amount. What mentioned for computer? Computer should be depreciated at 10%. This is the adjustment we have. So computer will write on asset side less 10% depreciation. So 2150 outer column में minus करके 19,350. This is the amount we'll write. Computer is depreciated. That means there is a loss on asset. So revaluation account or P&L adjustment account on debit side will record it. Moving to vehicles. Vehicles, what adjustment we have? Vehicles appreciated by 20%. So again on asset side, we'll write vehicle ka original amount, we'll add appreciation and accordingly whatever is given 20%. So 4,500 and the total in outer column 27,000. Now vehicle appreciated, asset appreciated, that itself means it is profit for firm. So on P&L adjustment on credit side itself, we'll write by vehicle 4,500. Now these adjustments we did earlier also in admission of partner also. So similar kind of adjustments for asset and liability revaluation we are having. So that is the reason I'm going a bit faster. Still, if you feel like you can decrease the speed while watching the video or you can move back and again you can see it. Okay. Now moving further, what we have is creditors. Creditors, there is no adjustment as such. So same amount will record in liability side, new balance sheet. Bills payable, again, same amount will write. There is no adjustment for this. So everything is done for our assets and liabilities. Let us move forward to the next adjustments which are remaining. So first of all, we have to calculate value of goodwill. So goodwill is average profit into number of years purchase. What is average profit? Total of these three, all the years of profit divided by 5. So here we go. 13,000 would be your average profit, and as number of years purchase is not given, it is assumed to be 1. Don't assume it to be 0 because बचपन में हमने पढ़ा है anything multiplied by 0 is 0. तो goodwill हमें calculate करना है. So if nothing is mentioned, number of years purchase has to be assumed as 1. So 13,000 into 1, so goodwill is 13,000. Now what to do about this goodwill? In adjustment 7, it is mentioned there should not be goodwill written in our books. So first we'll raise this value of goodwill, this firm's goodwill. Okay, we'll raise it and then we'll write it off. So similar adjustment we have to do in our ledgers as well. So raising the value of goodwill, the entry would be goodwill account debit to all partners capital. That is old partner itself means all partners. So in OPSR will divide this amount. Okay, so this is the calculation part. And also it is to be written off as per adjustment number 7. So Sagar and Sam capital debit to goodwill. Now this has to be in new ratio which is also given in question. 2:1. It is given already. So it is divided in this amount. The division is this amount. So here we go. First of all, for this we'll record in capital account on credit side by goodwill. These amounts we will record here. You can see it properly. Look at it. These amounts we have recorded by goodwill, capital account, credit side. And also for this, we'll write 2 goodwill. For writing off, we'll write 2 goodwill, Sagar amount and Sam's amount. Sahil is retired, so remaining partners are Sagar and Sam. So these are the amounts we have recorded.
will we show this amount in our new balance sheet? The answer is no, because it is written off. There is nothing left for goodwill. So chalo, let us continue forward. I hope goodwill adjustment is very, very clear. It is very simple. We have calculated the amount of goodwill by the formula, and then we have raised it in all the partners, and we have written off in remaining partners. Why? Because it was mentioned in question, no goodwill should be shown in our books. Next adjustment. Is there anything left? No, nothing. All the adjustments are done. So here we go. P&L adjustment will balance. Balancing amount is 5350. It is to be divided in all the partners. Before retirement we are doing this. So all the partners, Sagar, Sahil and Sam. So as per their ratio, whatever their ratio is, 4:3:3, whatever it is. So in that ratio we have divided it. Obviously it will go to the opposite side in capital account. So capital account will write P&L adjustment account and the amounts in the particular partners column. Now what we will do is, first we will balance retiring partners column. Okay, first we'll balance retiring partners column, that itself Sahil's column. So in Sahil's account, credit side, the total is 23,005 rupees. Same total we have recorded on debit. There is nothing on debit. So same total ही as a balance हमें लिखना है. But this balance is what? It is mentioned in question that Sahil's loan we should record it as. So here we go, Sahil's loan, and also as this is Sahil's loan, this is a credit balance, so it will go to the liability side. We have to pay the amount to Sahil. So on liability side, we'll write it down. Second effect. I hope it is clear. Now for remaining partners, what we'll do, we'll balance their accounts as well, and obviously it would be the closing balance because they are continuing partners, no? They've gonna continue the business. So the balancing figure would be the closing balance, that is balance CD. So for Sam, the total is this much. We have deducted this amount, so 14,672, and for Sagar, credit total is this much, and the balance is this. This is closing balance. So again, capital closing balance will go where? Liability side only. So in liability side, let us record partners capital, Sagar and Sam. These are the remaining partners. This is the total capital amount. Moving forward, we also have prepared cash account. So we will balance it. We'll write cash balance in balance sheet, and then we'll tally our balance sheet. So for cash, nothing was mentioned. Nothing, only opening balance. So that itself would be the closing balance. So we'll write closing balance 4,500 in balance sheet asset side as well. Look at it, cash 4,500. Now it is time to balance our, to tally our balance sheet. So here we go. The total of balance sheet is 70,850 on both the side. Obviously, you have to take total of both the sides. सिर्फ एक ही साइड में सर कम अमाउंट था, एसेट में ना ये बार कम अमाउंट था, तो मैंने एसेट का ले लिया सर, और बैलेंस शीट में लायबिलिटी में तो उतना ही आएगा, तो मैंने लिख दिया, या लायबिलिटी में कम अमाउंट्स था इसलिए मैंने वो किया, एसेट में कॉपी किया. ऐसा मत करो. अगर आपके पास टाइम है, दोनों करके देखो टैली हो रहा है क्या. नहीं हो रहा है तो समझ जाओ कहीं पे कुछ हमने कैलकुलेशन एरर तो नहीं किया, कुछ रह तो नहीं गया लिखने का, तो फिर आपको करेक्ट आंसर आएगा. ठीक है, ये कब, जब टाइम बचा है तब, या तो फिर लास्ट मिनट्स कुछ बचे रहते हैं आपका पेपर होने के बाद, तब ये कैलकुलेशन करना है, लेकिन टोटल अभी करना है. फिर क्या गलत आया उसके लिए टाइम है तो वो गलती सुधारो, नहीं तो बाद में गलती सुधारना, एटलीस्ट समझ जाएगा कुछ गलत है. इसीलिए यू हैव टू टेक टोटल ऑफ बोथ द साइड्स ऑलवेज, एसेट एंड लायबिलिटी सेपरेटली. चलो, सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 7. we'll go for the next questions as well. More questions will solve in our upcoming modules. Till then, whatever we have discussed, solve it on your own also. Okay, एक बार मेरे साथ आपने सॉल्व किया, अभी वापस एक बार सिमिलर एडजस्टमेंट्स आ रहा है क्या करके देखो.